Okay, uh, let's proceed ahead. Today we'll start with two targets. So whatever we were doing earlier with one target, now we'll be doing with two targets. So we have to double speed. Okay. All right. Two targets. There's a target Charlie and there's a target Delta. So ownership course WO is 240 degrees true divided by 15 knots in RV. There is a target Charlie and there is a target Delta. 1000 hours. Target Charlie is 314 degrees true and 11.9. Delta is 208 and a half, 10 miles. Then 10, 12 is 314, 8.3 and 211, 5.1. Okay, write the question now. Master of ownership. Master of ownership desires to take action at 1016. So action is at 1016 by means of a single alteration of course, a single alteration of course or reduction in speed so that the CPA of either target will be not less than 2 miles. Evaluate the possible alternatives. State which action is most preferred and why. सर इवैल्यूएट के बाद रिपीट करना. Evaluate the possible alternatives. State which action is most preferred and why.
Okay. Start the question, break the two triangles. You'll have to work at double the speed now. Scale number 3 to use.
Excuse me, sir. Yes, please. Yes, sir. Sir, can you just confirm WO once again, sir? Can I confirm what? WO, sir. WO. Yes, sir. WO ownership course is 240, 15 knots in RV. Okay, sir. Thank you. सर ये जो हम पी की इंटरपोलेशन करते हैं ये शीट पे दिखाने हैं सर? नहीं, ये नहीं दिखा। ओके, बस हम सीधा अपने आप ही डिस्टेंस लेके कट कर दें उधर। एब्सोल्युटली। ओके सर। शीट पे आप वही चीजें दिखाओगे जो मैं आपको यहाँ लेफ्ट साइड ऑफ द बोर्ड में दिखा रहा हूँ, ये सारा शीट पे जाएगा। ओके सर, ओके। Let me know when you are ready. Ready, sir? Okay. So basically, let's describe the situation first. क्या है, हो क्या रहा है? We are at Charlie, heading 240. Right? We are in RV. We have got one target, Delta, which is on our port side, and which is going to pass ahead of us by a very narrow CPA. Then we've got another target, Charlie, which is on our starboard side, and उसके साथ CPA हमारा 0 है. ROR says that in RV, rule 19 applies. As per that,
any target forward of the beam, I shall not alter course to port other than for a vessel being overtaken. That if I am overtaking a vessel, then I can. Other than that, I cannot. So therefore, I can only alter course to starboard. Is everybody agreeing to this statement, whatever I am making? Yes. So Yes, port alteration is not allowed. सर एक बार रिपीट कर देंगे प्लीज. The targets are all forward of my beam. Rule 19 prohibits me from altering course to port. Yes sir. So I can only alter course to starboard. Yes. Okay. So option number 2, you will write down not permitted as per ROR because of, now you start writing everything over here. So you quote rule 19 का relevant part, delta 1 and delta 2, you quote that, and then you say it is not permitted. I can only alter course to starboard. And here the targets are all forward of my beam, both of them. That's why. Now we come to option number 1, alteration of course to starboard. Now, when delta alters course for delta, when I'll alter course to starboard, WO will become WO1. Then O1A will go like this. And if O1A will go like this, the tangent will go like this to the south of the circle. सर एक बार दोबारा वर्किंग बताना था. When own ship has to alter course to starboard, WO will become WO1. WO will have to become WO1. If WO1 is like this, then O1A will be like this. If O1A is like this, the tangent will be like this. That means the tangent will be coming to the south of the circle. Yes. All right. Now let's go to Charlie. If WO alters course to starboard, becomes WO1, then O1A will become like this. The tangent will become like this, to this side of the circle. That means to the west of the circle. Yes, sir. Okay. Now the question is how to decide for whom should I alter course. That means out of these two chaps, Charlie and Delta, there is one chap who is a bad guy, and there is one chap who is a good guy. Good guy is that chap who will touch the circle first, who will become a tangent early. He's a good guy. Bad guy is that guy for whom I have to alter more, so that the good guy is already taken care of. I have to decide which out of Charlie or Delta is a bad guy. Delta. Whom a larger alteration is required. Delta. Does everybody agree Delta is a bad guy? Why delta?
relative approach speed is more. मैं फिर से रिपीट करता हूँ। तो प्लस साइन के आगे से उसको पीछे लेके जाना है तो ज्यादा डिस्टेंस ट्रैवल करेगा। जिसके लिए मुझे ज्यादा ऑल्ट्रेशन करनी पड़े वो बैड गाय है, जिसके लिए मुझे कम ऑल्ट्रेशन करनी पड़े वो गुड गाय है। किसके लिए मुझे ज्यादा ऑल्ट्रेशन करनी पड़ेगी? ही इज अ बैड गाय। डेल्टा डेल्टा के लिए ज्यादा करनी। तो सर वो पास उसकी स्पीड भी ज्यादा है एंड इज क्रॉसिंग आउट हेड ऑफ अस, उसको पीछे लेना है एंड पास में भी है तो ज्यादा अल्टर करना पड़ेगा। So delta is the bad guy. We are agreeing on that. So therefore I will start my tangent drawing for delta. So therefore for delta I draw my tangent. So now I have to transfer Pn backward through A. So put your ruler Pn, transfer it backward through A. Draw a parallel line. Next, speed of ownership is the same. So radius as WO, cut an arc. Call it as O1. Join WO1. Then WO1 is the new course, alteration. So 307 आ रहा है। 307, let me just check. Three 117 है आंसर। अच्छा 321 है। ठीक है, that's fine. So you will write down over here because larger alteration of course for delta is required. Hence, we draw tangent for delta. Therefore, new course WO1 for delta is equal to whatever course you're getting. My answer is 317, so I'm just writing that. 317 degrees, true. That is alteration of course 77 degrees to starboard. Okay, having drawn this, now we have whatever we have done here, we have to do it on Charlie also and show that. So draw WO1 equal to 317 on Charlie.
Speed is the same. So WO equal to WO1. Join O1A. Please remember nomenclature remains the same. Sir, what remains the same? Nomenclature. जो नेमिंग करते हो यहाँ पे वही नेम वहां पे भी वही रहना चाहिए. जो यहाँ पे नेम कर रहे हो एब्रीविएशन ले रहे हो वो जो डेल्टा में है वो चार्ली में भी होने चाहिए सेम. अरे डेल्टा का W01 को हमने ट्रांसफर किया ना सर ये चार्ली पे. या डेल्टा जो हमारा न्यू कोर्स है 317 वो चार्ली पे ट्रांसफर किया है. या फिर नया कोर्स ले सकते हो 317 एंड वहां से ट्रांसफर कर सकते हो. ट्रांसफर इसमें वो W को रेडियस रख के एंड W से हम लोगों ने O1 मार दिया ना. दैट्स राइट बिकॉज स्पीड इज द सेम. यस. ट्रांसफर O1A थ्रू P. Transfer O1A through P. So CPA 3 miles आ रहा है. That doesn't matter. We don't have to measure it. Since it is going outside the circle, we have chosen the correct bad guy. So you just write down CPA for Charlie is greater than 2 miles. CPA for Delta is equal to 2 miles. सर ये जो टेंजेंट ड्रॉ किया है चार्ली के लिए थ्रू पी उसको ऐसे ही छोड़ देना. उसको ऐसे ही छोड़ देना. ये टेंजेंट नहीं है. It is just a relative line of approach. It is not a tangent. Okay. Option number 3, reduction of speed. For reduction of speed, we need to check the good guy, bad guy again. For reduction of speed, separate check need to be done. So calculate the original TCPA for Charlie. Calculate the original TCPA for Charlie. Will be 10-16 plus distance to go PC over OA into 12 minute. The original TCPA. Now forget about the alteration of course. Now we are only looking at reduction of speed. And we are trying to calculate the original TCPA of Charlie. So the collision for Charlie will occur at 10:40 collision.
Yes, sir. Same as. Okay. Now calculate the original TCPA for delta. Okay. Original TCPA for delta. Yes. N1 ये रहा original CPA. So 1016 plus PN1 upon OA into 12 minute. $24. 24. So the original TCPA of delta is happening earlier than original TCPA. TCPA of delta is happening earlier than TCPA of Charlie. Therefore, larger reduction of speed is required for delta than Charlie. मतलब ये मेरे लिए ज़्यादा डेंजरस है बिकॉज ये मेरे पास जल्दी आ रहा है, इसकी रिलेटिव स्पीड बहुत तेज है एज कंपेयर टू चार्ली. दैट विल हैपन लेटर, दिस विल हैपन अर्लियर. सो मुझे डेल्टा के लिए स्पीड रिड्यूस जल्दी करनी पड़ेगी और ज़्यादा करनी पड़ेगी. So if while remaining on the same course as WO, if I'm going to reduce my speed to WO2, then my line of approach will become O2A. If my line of approach will become O2A, that means my tangent should be on the north of the circle. Agreed? Yes, नहीं sir. सर. Yes, sir. एक बार बता दोगे सर? If I am on WO and I have to reduce my speed to WO2, then if O2 is going to lie somewhere here, my relative line of approach will become O2A like this. If O2A will become like this, my tangent will be on this side, north of the circle. Yes sir. Right. So that's what I'm saying. So I draw the tangent this time for delta to the north of the circle. सर इसको ऐसे भी इंटरप्रेट कर सकते हैं कि सर मैं स्पीड स्लो कर रहा हूँ तो टारगेट आगे से ही जाएगा. That's right. बिल्कुल ठीक. That is also another interpretation of the same thing. Call this as N2. Transfer PN2 backward through A
wherever it cuts WO, all that point as O2. Then WO2 for delta is the reduced speed. Becomes 2 knots. सर स्पीड हाफ किया था? नहीं, ये तो मैंने ऐसी प्रोसेस ही बना दिया है, आपको तो कैलकुलेट करनी पड़ेगी। 1 आ रहा है। 1 नॉट। ये 7 नॉट आ रहा है। हाउ मच इज योर ड्रिफ्ट, कितनी आ रही है? 1.5 आ रहा है सर। ठीक है, whatever you're getting. Basically, that the whatever distance WO2 is there, that is for 12 minutes. So 60 minutes के लिए कितना होगा? शिफ्ट तो 0.2 का आ रहा है, उससे फिर वो 1 नॉट ही आ रहा है। ओके, ठीक है। 0.4 आया सर, बाकी सारे आंसर मैच किए सर, पहला जो आंसर था वो नहीं मैच किया मेरा। 303 आया था सर, वो ऑल्टरेशन ना कोर्स का, बाकी सब ठीक है सर सारा। ठीक है, ओके। So now you have to superimpose this speed onto Charlie. So सर ये बात बताना सर, ये जो WO2 स्पीड ली आपने, दैट स्पीड यू हैव टेकन फॉर 12 मिनट्स या फिर फॉर कैलकुलेटेड फॉर 1 आवर? भाई 12 मिनट में इतना डिस्टेंस है तो 60 मिनट में कितना होगा? अच्छा, आपने 60 मिनट वाला डिस्टेंस लिया, ओके सर। 12 मिनट में मैं WO2 करता हूँ डिस्टेंस, तो 60 मिनट्स में मैं कितना करूंगा? वो मेरी स्पीड होगी ना। सर 2.2 आ रहा सर। ठीक है, दैट्स फाइन। नाउ superimpose WO2 distance over here onto Charlie. Superimpose WO2 distance onto Charlie. Join O2A on Charlie. And transfer through P. और वो और बाहर से जाएगा। Which is what we wanted to show. CPA for delta is equal to 2 miles. CPA for Charlie is greater than 2 miles. सर ये ऑल्टरेशन ऑफ कोर्स में जो स्टार्ट में उसमें टारगेट सी का एक बार बता सकते हैं प्लीज? तो जो भी नया कोर्स था वो यहाँ पे WO1 बना दिया हमने।
बेसिकली जो डेल्टा में हमने किया था उसी को सुपर इम्पोज कर रहे हैं चार्ली में। सो WO1 इधर जो डेल्टा का था उसको इधर में ट्रांसफर कर दिया, फिर O1A बना दिया और P के थ्रू ट्रांसफर कर दिया, और वो 2 माइल के बाहर से जा रहा है। ओके सर, ओके सर। So last part of the question, between number 1 and number 3, which one would you prefer and why? 1. So हमने जो लास्ट टाइम जो लिखे थे सारे पॉइंट्स, वो जो ऑप्शन था ऑल्ट्रेशन ऑफ कोर्स वर्सेस रिडक्शन ऑफ स्पीड वाला, वो सारे पॉइंट्स लिख देना। 8 पॉइंट जो लिखे थे, 7-8 पॉइंट जो लिखे थे हमने। So you will prefer alteration of course because of following reasons: instantaneous, readily visible, prudent, more starboard side prudent, practical, starboard side clear, as per ROR says so, results in instant increase of CPA and no loss of maneuverability. वो सारे पॉइंट्स लिख देना इसमें। वो आखिरी पॉइंट है, वो आखिरी उसका है। Good seamanship. हाँ, वो सारे बस this thing. So that is how it is. You go to write that. ठीक है, these type of questions come in the exams. और अभी हमने 2 की किए हैं, अभी 3 का भी करना है। So they take time. So just summarizing the whole thing once again. The crux of this whole question is based on good guy, bad guy. Okay. Alteration of course. How to identify the bad guy? वो टारगेट जिसके लिए CPA एंगुलर रेडियस जो है, जो CPA की एंगुलर रेडियस थी वो ज्यादा है, वो बैड गाय है। ठीक है, इसकी ओरिजिनल CPA 0 था, इसको टेंजेंट बनने के लिए एंगुलर रेडियस 2 माइल्स की इसको ट्रैवल करनी पड़ती है। इसकी पहले ये एंगुलर रेडियस 2 माइल प्लस x, इसको पहले 0 पे जाता, फिर 2 माइल शुरू करता अपना। तो इसकी CPA एंगुलर रेडियस 2 प्लस x, सिंस इसकी एंगुलर रेडियस ज्यादा है, देयरफॉर ये बैड गाय है। समझ में आ गया? Yes sir, समझ आया। सो फॉर ऑल्ट्रेशन ऑफ कोर्स, जिसका एंगुलर रेडियस ज्यादा ट्रेवल करेगा CPA की आर्क, वो बैड गाय है। उसके लिए मुझे टेंजेंट बनाना है। अगर मैं बैड गाय के लिए टेंजेंट बनाऊंगा तो गुड गाय इज ऑटोमेटिकली टेकन केयर ऑफ। तो ये हो गया पहला, ऑल्ट्रेशन ऑफ कोर्स। रिडक्शन ऑफ स्पीड, ऑलवेज कैलकुलेट द TCPA, ओरिजिनल TCPA। जिसका TCPA कम है, यानी कि वो मेरे पास जल्दी आ रहा है, वो बैठ गए। उसके लिए मुझे स्पीड रिड्यूस ज्यादा करनी पड़ेगी। ठीक है, इज दैट ओके? डज इट मेक सेंस? Yes sir. ओके। सो ये 2 पॉइंट्स याद रखने हैं, बाकी सारा इसी का खेल है। ऑल्ट्रेशन ऑफ कोर्स, रिडक्शन ऑफ स्पीड, गुड गाय बैड गाय। आंसर में गुड गाय बैड गाय नहीं लिखोगे आप, प्लीज। आंसर में ये सब नहीं लिखना है, गुड गाय बैड गाय। दिस इज ओनली टू रिमेंबर, याद Good करने vessel, की। good vessel, bad vessel sir. ये सब कुछ नहीं लिखना है, गुड वेसल बैड वेसल नहीं लिखना है। एग्जामिनर्स डोंट अंडरस्टैंड ऑल दिस लिंगो। लार्जर ऑल्ट्रेशन, स्मॉलर ऑल्ट्रेशन, ये लिख सकते हो, ये लिख सकते हो। दैट इज अ टेक्निकल वर्ड टू यूज, बट गुड गाय बैड गाय इज नॉट अ टेक्निकल वर्ड। ये तो हमारी क्लास का तकिया कलाम है। बिकॉज वन ऑफ द गाइज वाज टेलिंग मी, सर ये समझ नहीं आ रहा है क्या है, तो कुछ और तरीका बताओ, ये वो। तो उस वक्त
क्लास में निकल आया, गुंडा नॉट गुंडा, वो सब शुरू हुआ. तो दैट इज हाउ इट स्टार्टेड. Question grow back. So that is how the whole thing originated. The origin of good guy and bad guy is that. So, but please don't write it. That's what I'm still getting guys who write this. So don't write it. That's not the right answer. So you have to write. या तो लिख दो कि larger alteration vessel for larger alteration, smaller alteration. That is acceptable. That is okay. ठीक है. Please revise the question thoroughly as we move ahead. All right. क्वेश्चन को अच्छे तरीके से रिवाइज कर लीजिएगा कि प्रोसीजर क्या है, कैसे करना है, ट्रांसफर कैसे करना है, वगैरह वगैरह, ऑल दैट. ऑलराइट, सी यू देन, बाय. डेट शीट मैंने फॉर द मार्च बैच, इट इज ऑलरेडी बीन पोस्टेड ऑन द ग्रुप. आई होप इट्स ओके विद एवरीबॉडी. Yes, sir. ओके, ठीक है. ऑलराइट, सी यू देन.